प्लेयर जो होता है ना उसका फैन बेस किसी भी कंट्री से हो सकता है, क्योंकि उसका फैन बेस कंट्री या रिलीजन पे रिलाई नहीं करता, वो क्रिकेट पे रिलाई करता है और क्रिकेट किसी को भी पसंद आ जाता है। हेलो। हेलो। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। मैं किरण हूँ, ये नुमान है। आज की जो हमारी वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये है, टाइटल है जी, हाउ इंडिया क्रिएटेड $11 बिलियन क्रिकेट एम्पायर। ठीक है जी, अब ये इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना ये आज हम देखेंगे। ये वीडियो हमें सजेस्ट की है जी मोहम्मद अमीर मायूक ने। इनकी वीडियो एक आधी हम पहले बना चुके हैं, इन्होंने 5-7 वीडियोस इकट्ठी सजेस्ट की थी, तो काफ़ी अर्सा पहले, 1-1.5 महीना पहले हमने इनकी एक वीडियो पे बनाया था। तो अमीर, थैंक यू सो मच आपकी सजेशन के लिए। आप भी जो लोग देख रहे हैं अपनी अपनी सजेशंस दीजिए। बाकी की बातें वीडियो के बाद करेंगे, पहले वीडियो देखें उसके अंदर है क्या, कैसे इतना बड़ा एम्पायर बन गया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट। चलो जी, शुरू करते हैं। Forget everything you think you know about cricket. Welcome to the Vivo Indian Premier League. Oh, across the lawn. मंदिर। This is the Indian Premier League. It's the fastest growing sports league in the world, ahead of the NFL, the NBA, MLB, and English Premier League. Each NBA game is worth $2 million, but a single IPL game is worth more than $15 million. The IPL has turned into a global cricket phenomenon that runs for 2 months with 10 franchises, 74 matches, and more than 500 million viewers. And unlike the other big sports leagues like the NFL, NBA, and Formula One, which were founded decades ago, the IPL only started in 2008. So how did India build this juggernaut? Back in 2007, cricket had die-hard fans, but attracting new viewers and investment was a struggle. The traditional heritage type of cricket, Test cricket, took 5 whole days per match, and even the shorter version, the one-day international, lasted 7 to 8 hours. But in 2003, England introduced a fast-paced version of cricket called T20. In T20 cricket, each match takes about 2.5 hours, similar to the time span of other popular team sports, and it became an instant hit. That's hit very, very well. All the way again. Brings up. After India won the 2007 International T20 World Cup, Lalit Modi, the vice president of the Board for the Control of Cricket in India, saw an opportunity to kill a few birds with one stone. See, Modi had a few problems. The new upstart Indian Cricket League threatened BCCI's authority and started poaching big players. It needed to be crushed. Modi had also seen the success of huge franchise models in the US and wondered why they didn't have a similar money-making cricket franchise, especially in India, where cricket is more like a religion than a sport. So Modi pulled the trigger, and in 2008, the Indian Premier League was founded, a T20 cricket league with 8 teams that would be played over just 2 fast-paced months. New teams were created to play in a franchise format and auctioned off to new owners on January 24, 2008 for a total of $724 million, with each team based in a different Indian city. It wasn't just a shorter format that the IPL committed to. The organizers went all in on entertainment. They made it into a spectacle, and the old-fashioned traditionalists find this abhorrent. To them, that's not cricket. Cricket is theatre, where, you have intellectual discussions as to where the ball is played and so on and so forth. Here they said, no, you don't need all that. You want entertainment. You want to rival what the cinema offers you, what any other form of entertainment offers you. This translated into instant success. In their first season, the league garnered almost 1.2 billion viewers and made more than $100 million in revenue. This was a more than 20x increase in viewership. Historically, the old format of cricket had struggled to get 50 million viewers. Become something which is more sold as a product, has more things going on for the viewer when they come to the ground. Oh, and remember the Indian Cricket League? It closed after 2008. Modi won. There is one simple reason that the IPL is a money-making machine: audience. The IPL promises even more entertainment, even more action,
and even more excitement. India has a population of 1.4 billion that will soon overtake China for the largest in the world. It also is one of the fastest growing middle classes. That means lots of eyeballs and lots of potential ad revenue. 80% of the money that the IPL makes comes from central revenues that are negotiated by the BCCI. That includes league-wide sponsorships like the one with Tata, and the league's central media rights agreement with broadcasters like Star India. In 2022, those rights were sold for over $6 billion. $3 billion came from Disney-owned Star India for TV rights, and another $3 billion came from Viacom 18 for streaming rights. Split across just 74 matches makes each one worth over $15 million. And as views rise, the BCCI can charge more and more to the broadcasters, who will make more on their side from increased ad sales and subscriptions from a bigger audience. That's why the IPL is such a big deal. It combines an exciting format of a popular sport in a country that has an exploding population. And it's not just India. In 2020, the IPL began broadcasting to more than 120 countries, including the United States, United Kingdom, and South Africa. This also means that the franchises make... अच्छा, इधर मैं करेक्शन करना चाहूँगा. इसने बोला कि पॉपुलेशन की वजह से जो है ज़्यादा चलता है. भाई नहीं, पॉपुलेशन ठीक है, वन ऑफ द रीज़न, बट इंडिया में क्रिकेट बहुत देखा जाता है, पसंद किया जाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्रिकेट ज़्यादा चलता है, बिकता है. ठीक है, ये मेन रीज़न है. A lot of money. BCCI keeps only 50% from the media rights deal. The other 50% is split between just 10 franchises. An average IPL match averages 30,000 people in attendance. This allows ticket sales to account for as much as 15% of each team's revenue. Rounding out each team's revenue pie chart are individual team sponsorships, merchandise, and prize money. Bats, bails, headgear, and team kits. Everything is sponsored, with some franchises like the Chennai Super Kings making a lot more from sponsors because they have a bigger fan base. There's a powerful virtuous cycle here. By playing the most exciting format and garnering the largest audiences, the IPL makes the most money, which means they attract the best players. Superstar Virat Kohli's salary and winnings for 2019 were just $4 million as he played for the Royal Challengers of Bangalore. But his IPL stardom allowed him to bank an extra $21 million through endorsements. This led the IPL to bring in international stars like A.B. de Villiers, David Warner, and Chris Gayle to join up. But all these factors and the big money led to tensions. Test cricket was traditionally more respected than T20 cricket. The classic cricket format was the ultimate test of a player over 5 days. But IPL money was turning heads. In 2007, only half of players said they'd still reject a national contract to play T20 cricket. And as the IPL drew more viewers, players, and broadcasters, real discussions began about whether Test cricket would be reduced to just a few big countries. It seemed like the IPL was going to crush everything in its way. Even when COVID hit, despite stadiums losing out on ticket revenue, there were still millions and millions of TV viewers. The franchise values doubled in 2020. And the success of the T20 League in India got people hungry for more. IPL franchise owners are now looking to buy T20 cricket franchises in other countries like South Africa, hoping to replicate the IPL's success. Leagues have started in the Caribbean, Australia, Pakistan, and other countries. It also arrived in the US as Major League Cricket. The growth of the Indian Premier League has been insane. In 2009, 1 year after its founding, the average IPL franchise was valued at $67 million. 14 years later, the value of those franchises has exploded to more than $1.1 billion. That's an annualized growth rate of 24%. For comparison, over the past 13 years, the growth rate of NBA teams has been 16% and NFL teams has been 10%. And the IPL isn't slowing down. Who knows if those leagues outside of India will be successful, but you can feel confident the IPL will continue to grow in popularity and the nation of India will also continue to succeed. Check out our past video breaking down why the nation of India is poised to win the 21st century. यार देखो, मैं
एक क्रेडिट तो देना चाहूँगा इंडिया को। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने IPL शुरू किया है। आप लोगों ने IPL शुरू किया तो आप लोगों की तरफ देख के हमने यहाँ पे PSL शुरू किया, ठीक है जी। IPL आप लोगों का चला। अब देखो हम लोगों का PSL पता क्यों नहीं चलता इतना, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर आना ही नहीं चाहते। वो उसकी वजह आपको भी पता है, हमें भी पता है कि यहाँ के हालात ही हम लोगों ने ऐसे बना के रखे हुए हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो आना ही नहीं चाहते। और जो अपनी टीम है वो आपको पता ही है, वो मुझे कई मैं मजाक कर चुका हूँ। हमारी पाकिस्तान की टीम नहीं है, चाइना की टीम है, कभी भी खराब हो जाती है, नहीं तो कभी भी खराब हो जाती है। तो ये तो हिसाब है हमारा। तो अब बाहर से अगर प्लेयर नहीं आएंगे, यहाँ पर कोई रीजन नहीं मिलेगा उनको। अब 11 बंदे हैं हमारे टीम के, 12-13 2 एक्स्ट्रा भी डाल दो, ठीक है। तो कितने उसमें से आप एक टीम बना के आपस में थोड़ी लड़ोगे, एक टीम किससे लड़ेगी, ठीक है। अब जो प्लेयर आते हैं बाहर से, वो आते फिर इस कंडीशंस पे हैं कि भाई हम कहीं जाएंगे नहीं, हम पैसे ज़्यादा लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वो अपनी कंडीशंस पे आते हैं ना। जब आप चाहते हो ना किसी को लाना, फिर वो अपनी कंडीशन पे आता है, लेकिन जब वो खुद आता है ना तो फिर वो आपकी कंडीशन पे आता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमारा हिसाब उल्टा है, हमें प्लेयर्स ड्राइव कर रहे हैं ना कि कंट्री प्लेयर्स को ड्राइव कर रही है। तो यहाँ पे ये हाल चल रहा है। लेकिन इंडिया तो भाई देखो ग्रोथ देखो कहाँ तक कितने पहुंची, 24% ग्रोथ और फिर 1.1 बिलियन डॉलर्स पर टीम, ठीक है। तो अगर आपके पास 11 टीम्स हैं टोटल या 8-10 टीम है तो भाई सीधा सीधा मतलब निकल गया 10 बिलियन डॉलर्स। तो कमाल है यार। वैसे जिसने भी IPL का आइडिया सोचा ना, मतलब पहले तो इंग्लैंड में शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद इंडिया में सोचा गया बनाने के लिए IPL को। मैं कहता हूँ कमाल सोचा गया। आई थिंक 2008 में जो शुरू हुआ था, 2008 में शुरू किया था। और जिस तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है वो बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। क्योंकि देखो जब भी कोई नई चीज शुरू होती है ना, उसके अंदर कोई ना कोई फेमस पर्सन आपको चाहिए होते हैं। तो इंडिया की टीम के साथ साथ उन्होंने पकड़ा क्रिस गेल को, AB डिविलियर्स को, ठीक है। मेन जो उस टाइम पे प्लेयर्स चल रहे थे उन्होंने उनको पकड़ा। हमारी हालात ही हमारे कुछ ऐसे थे। हमने 2008 के अंदर ही शुरू हुआ था IPL, 2008 में ही जो यहाँ पर हम मुंबई ताज होटल पे हुआ था, अटैक हुआ था। तो तब से खैर रिलेशन तो हम लोगों ने पहले भी कोई अच्छे छोड़े नहीं रखने वाले इंडिया से, लेकिन उसके बाद से तो बिल्कुल भी नहीं रहे। तो अगर सोचो अगर वो हम लोग इकट्ठे होते, यानी कि हमारे रिलेशन अच्छे होते, तो कितना मज़ा आता कि सारे प्लेयर्स मिल के खेल रहे हैं। अब देखो अब जो प्लेयर होता है ना, मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूँ, प्लेयर जो होता है ना उसका फैन बेस किसी भी कंट्री से हो सकता है, क्योंकि उसका फैन बेस कंट्री या रिलीजन पे रिलाई नहीं करता, वो क्रिकेट पे रिलाई करता है। और क्रिकेट किसी को भी पसंद आ जाता है। जैसे शोएब अख्तर है, वो इंडिया में बहुत लोग उसे पसंद करते हैं। इस तरह विराट कोहली के बहुत आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी फैन है। मतलब अगर विराट कोहली है ना तो आधा पाकिस्तान उनका फैन है, ठीक है। तो इस तरह प्लेयर्स हर जगह चलते हैं। लेकिन भाई मैं कहता हूँ कमाल एग्जीक्यूट किया है। कहाँ से IPL शुरू किया था जब उनको स्ट्रीमिंग राइट्स मतलब इतने नहीं बिक रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने भाई 500 मिलियन से उठा के जो 11 मिलियन पे लेके गए हैं। मैं कहता हूँ कमाल है भाई, कमाल है, बहुत अच्छे यार। अमीर थैंक यू सो मच भाई आपकी वीडियो सजेशन के लिए, बहुत अच्छी वीडियो थी। आप भी जो लोग देख रहे हैं अपनी अपनी वीडियो के सजेशन दीजिए। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।